Okay, everybody. So the topic which we are going to study today, I started this topic yesterday in class, and it was sequences. And there are four sequences in Cambridge examinations. The first one is arithmetic sequence, second one is geometric sequence, third one is quadratic sequences, and fourth sequence is a cubic sequence. Now they say that what is arithmetic sequence? Arithmetic sequence is that type of sequence in which we get the next number by adding, subtracting the same number. You can see that there is a sequence 1, 3, 5, 7, and 9. The rule is we can see that it's plus 2. So we have to write that add 2. Sometimes in the exam you get this question for 1 mark only, that write the rule of the question. So this is for 1 mark only. So you will get this in examination. And then they say that find out the next two terms. So you have to determine the rule first. So you can see that 1 plus 2 is 3, 3 plus 2 is 5. So 9 plus 2 is 11, and 11 plus 2 is 13. And then we discussed the formula for the n term of the sequence, which is arithmetic. So the formula is an is equals to a1 plus n minus 1 into d. That's the formula for the sequence. Now we studied that an is equals to n term. An is equals to n term. A1 is the first term of the sequence, and d is the difference which is found by next minus previous. Now let's start formulating the formula for this sequence. It is 1, 3, 5, 7, and 9. So for example, if that 7 is my next number, so this p is my previous number. So 7 minus 5 is 2. So let's formulate each and every value. A1 is 1. You can see that I plotted 1 here, and d is right here, which is 2. So I plotted this. Now it's a basic algebra. So 2n minus 2. Now arrange it 2n plus 1 minus 2, so 2n minus 1. So I hope that this sequence is clear to most of the students. If any one of you have any question in this sequence, you can ask me right now, because I'm proceeding a bit too fast. Just because of that, because I want to focus on quadratic and cubic sequences. Is it clear, everybody? Okay. Geometric sequence is the sequence in which we get the next term by multiplying a particular number. You can see that there is a sequence 2, 4, 8, 60, and 32. It's a doubling. So it means that 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, 8 times 2 is 16. So it is multiply by 2. So the formula for this sequence is an is equals to a1 times r whole power n minus 1. So there are two terms in this formula, a1 and r. And we are familiar with a1, which is first term. Now what's r? R is common ratio. It means that next divide by previous. You have to select two numbers randomly. For example, this is 16, it is my next one, and this is 8, this is my previous one. So 16 divided by 8 is 2. So that is what my r is. Just what I did in the formula, I wrote the formula correctly, and then I wrote that a1 is my first term, which is 2, and r is also 2. So I wrote this here. Now Daniel, you can see that as the bases are same, I can add the powers as well. So 1 plus n minus 1, so plus 1 and minus 1 can be cancelled out. So is this clear? Is this clear, everybody? So 2n is the formula. You can take it by formulating 1, 2, 3. 2 power 1 is 2, 2 power 2 is 4, and 2 power 3 is 8, 2 power 4 is 16, and 2 power 5 is 32. Rida, Ramsha, beta, is this clear to both of you? Say yes or no. Yes. ओके. नाउ वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वाड्रेटिक सीक्वेंस. ये नोट्स में पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगी. तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस से मैं दोबारा एक एक सीक्वेंस भी करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, और फिर मैं पास पेपर पे चला जाऊंगा डायरेक्टली. ठीक है, तो काइंडली जहाँ पे समझ ना आए तो एकदम पूछ लीजिएगा. क्वाड्रेटिक सीक्वेंस. ओके जी, क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस. ठीक है, लेट मी राइट अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस. मैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस जरा यहाँ से लिख लूँ अपने फोन से, फिर उसका फॉर्मूला आपको बनाना सिखाता हूँ. नोट्स तो कल ग्रुप में आ गए थे. आई होप आप लोगों ने उस नोट्स को थोड़ा बहुत कॉपी कर लिया है अपनी कॉपी में. ऐसा ही है. ओके, सो इट्स 4, 7, 12, 19
and 28. Okay. First of all, look at the sequence very carefully. Is this sequence arithmetic? Yes or no? To No. decide, yeah, to decide that this sequence is arithmetic or not, what we have to do, we have to find out the first difference. We can see that it's plus 3 and it is plus 5. So it's not arithmetic, and at the same time it's not a geometric sequence because 4 times what is 7? Nothing. So this is the second. The difference is plus 7. Daniel, beta, pay attention, acha. And this is 28 minus 19 is plus 9. Okay. Now you can see that the first difference is not same. If the first difference is not same, it means that I have to move towards the second difference. So the second difference is plus 2, plus 2, and this is also plus 2. In quadratic sequences, the second difference is same. Okay. Now you can see that already that you know this that it's a quadratic sequence, so for sure the formula for the quadratic sequence is an square plus bn plus c. That's the format of a quadratic equation, and we all are very much familiar with that because we are done with the quadratic equations and graphs and everything. So now in order to find out the formula like this, I need to find out the value of a, b, and c. That's the problem, right? To find a, to find a, what do you have to do? You have to second difference, whatever the second difference is, just divide it by 2. Second difference divide by 2. So now you can see that the second difference is 2 itself. So 2 divided by 2 is equals to 1. So it means that in that particular formula, which is above, you can see that I have something available to me, which is a n square. It is 1n square now. Agree? Now it's time to find out b and c. How to do it? You have to remember that you have to do one thing, that you have to do what? You have to just make a table like that. Okay, आपने एक टेबल बनाना है. उस टेबल के अंदर इस तरीके से, अगर पेपर में टेबल ना हो तो आपने टेबल खुद बनाना है, ताकि आपको बस ये टेबल टेक्निक जो है ना बहुत आसान टेक्निक है. इसके अलावा कोई दूसरी टेक्निक है भी नहीं, लेकिन ये टेक्निक जो है आसान होता है. ओरिजिनल सीक्वेंस पहले यहाँ पे लिख लें. क्यूबिक भी इसी तरह ही है, वो भी इतना कोई मसला नहीं है. यहाँ पे आपने लिखना होता है ए एन स्क्वायर. ठीक है जी, यहाँ पे आपने ए एन स्क्वायर लिखना है. ओके, ओरिजिनल सीक्वेंस आपका क्या है जी? ओरिजिनल सीक्वेंस इज 4 7 12 19 एंड 28. सो 4 7 12 19 and 28. Ramsha beta, you can see that we have a value of a which is 1 n square. Agree? Yes or Yes. no? Okay, so I'm just writing here 1 n square. Agree? Can I write 1 n square here? Yeah. Because a is equals to 1 according to the formula above. Agree? So what we have to do, put 1 in n square. So 1 n square means n square. So 1 square is 1, 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, and 5 square is 25. All right. So now what we have to do? So in this step, we have to minus original minus a n square. That's the formula. Okay, that's the third step. So Rida, can you see that 4 minus 1 is what? 4 minus 1 is 3. 3. 3. Can you see that from everywhere I am getting 3? Yes or no? 7 minus 4 is 3, 12 minus 9 is also 3, 19 minus 16 is also 3. Can you see that? Yes or no? Yes, sir. If all numbers are same, just write that number with a n square, and the formula for the sequence is right in front of you. It is n square plus 3 is the formula for the above sequence. N square plus 3 this is the formula for the above sequence. Let's check it. Put n is equals to 1. N is equals to 1. Check it. 1 square plus 3, it is equals to 4. Ridak, you can see that the first number is 4. Yes or no? Let's check n is equals to 2.
So 2 square plus 3, it is equals to what? It is equals to 7 or not? Yes or no? Let's check for 5. That n is equals to 5. It means that 5 square plus 3, which is 28. Is this clear or not? The fifth term is 28. Is this clear, everybody? Yes or no? Yes. Any particular question? Rida, look at the table very carefully and tell me. Sir, Yes, beta. how did we get the n square plus 3? N square plus 3. Beta, you can see that this 3 is the subtraction of original and a n square. Yes or no? Yes, sir. So that is the reason I wrote 3 with the formula. Is this clear? Yes. Okay, for example, if the number is not same, for example, what happens if the number is not same? We can also get that question, right? But if the number is not same, so what we'll do then? We can We'll also use get a that arithmetic sequence for the very number. good, very good, very good. Let's try one more sequence with that thing. So that's very much better that if you practice like that, so it is a good thing for you. Like for example, it's example number 2. I'm just writing it here. I'm going with the quick flow. So मैं अब जरा स्लो नहीं, अब जरा थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा ताकि हम लोग क्यूबिक सीक्वेंस भी डिस्कस करें और पास पेपर भी कर लें. So ये होगा जी 3, 6, 13, 24. बेटा सीक्वेंस देख के बताएं अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है या क्वाड्रेटिक है, पहले चेक करना पड़ेगा डिफरेंस देख के. सो बताएं जी फर्स्ट डिफरेंस क्या है बेटा. माइक ऑन रखें बेटा, खैर कोई बात नहीं. +7. Okay, 13 plus what is 24? 11. It's 11. Okay, then it's 15. Okay, now check second difference, please. First difference is not same, so I have to move towards second difference. So it's +4. This is also +4, and this is also +4. Is this clear, everybody? Yes or no? It means that second difference is same. So Rida, the formula for the quadratic sequence is something like that. Yes or no? An square plus bn plus c, right? Yes, sir. Okay, to find the value of a is equals to second difference divided by what? Divide by? Oh, Very good. Divide by 2. So Rida, second difference को 2 पे divide करते हैं quadratic में. अच्छा, 4 divided by 2 is 2. So now you got the value of a. It means that a n square, it is equals to 2n square in this question. Is this clear, Rida? yes, sir. Okay, चलो that's fine. Now it's time to make a table. अब टेबल बनाना है, जरा जल्दी जल्दी बनाएंगे टेबल. और आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है कि टेबल में क्यों बना रहा हूँ. ठीक है. ओके, टेबल मैंने बना दिया. ओके, नाउ 3 रोज लगा दे दी हैं. ठीक है. ओके, नाउ आपने यहाँ पे लिखना है ओरिजिनल. ओके, यहाँ पे लिखना है आपने 2n स्क्वायर और इसमें से इसको माइनस करना है. ये हमने सीख लिया पहले. तो ओरिजिनल सीक्वेंस क्या है हमारे पास? 3, 6, 13, 3, 6, 13, 24 एंड 39. अच्छा, पेपर में इतना टाइम शायद आपके पास ना होगा, रूलर से बना दो. आप लोगों ने पेन से ही जल्दी जल्दी बनाना है. ठीक है. इज दिस क्लियर? ये तो मैं नीटनेस की खातिर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आए बाद में फिर जब नोट्स पढ़ो तो. चलें जी रिदा, जरा 2n स्क्वायर में 1 पुट करो बेटा. क्या आएगा आंसर? 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर. तो क्या आएगा आंसर बेटा? तो जल्दी बताइएगा. सर क्या करूं? बेटा ये 2n स्क्वायर में n की जगह पे 1 पुट करो ताकि मैं 3 के नीचे नंबर लिखूं. सर तो 4 आता है ना? नहीं 4. आता बेटा, देखो जरा. 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, सो द आंसर इज 2. इसीलिए मैं ओके. कह रहा था, मुझे पता है इजी चीजें बाजू का बंदा गलत करता है. अब 2 ओके. डालें जरा. 2 इंटू 2 होल स्क्वायर, it is equals to 2 square is 4 and 4 twos are 8. Now that's 8. अब 3 डालो जरा. 3 square is 9 and 9 twos are, come on, 18. 4 square is what? 4 square is 16 and 16 twos are, 16 times 2 is 32. 32. Okay. 5 square is 25. 25 times 2 is 50. Is this clear, everybody? Yes. Now it's time to minus it. So 3 minus 2 is 1. 6 minus 2 is 6 minus 8 is -2. 13 minus 18 is -5.
24 minus 32 is what? It's minus 8. Yes or no? 39 minus 50 is minus 11, if I'm not wrong. Is this clear, everybody? Now see, Rida, that we have different numbers in the last row. Can you see that? So now find the formula of this sequence and write with 2n square. So now we have another sequence, which is 1 minus 2 minus 5 minus 8 and minus 11. We have another sequence. अच्छा ये मैंने बहुत करीब करीब लिख दिया, समझ शायद ना आए तो इसको थोड़ा मैं अलग अलग कर देता हूँ. Okay, so it's 1, negative 2, negative 5, negative 8, negative 11. All right. Let's find out the formula for of this sequence और उसको 2n square के साथ लिख देंगे. First difference क्या है बेटा? बताएं जरा. What is the first difference? Hurry up everybody. Difference निकाल के बताएं बेटा. Next minus previous करें ना. 3. No, it's negative 3. Minus 2 minus 1 is minus 3. Hmm? Yeah. Next Minus minus 3. previous होता है. Minus 2 minus 1 कर रही हैं आप. Oh. Okay. Okay, it's also minus 3. Yes or no? This is also minus 3 and this is also minus 3. So Rida, we got this, that we have the difference. Agree? So it means that the sequence is arithmetic. Let's go with the formula. So an is equals to a1 plus n minus 1 into d. That's the formula for the arithmetic sequence. So now what do we have to do? A1 is the first term of the sequence, which is 1 plus n minus 1 into d. Now the value of d is minus 3. Now multiply करने simple algebra है 1, okay, minus 3n minus minus plus 3, okay, minus 3n plus 3 plus 1 arrange किया है खाली. So minus 3n plus 4 is that formula. Yes or no? Now write this formula. Write this. Write this with your an square, which is 2n square in this question. Remember that, Rida? So it's minus 3n plus 4. मलाइका बेटा समझ आ रही है? जी सर. Now it's time to check. अब time है check करने का कि हमने question ठीक किया कि नहीं. So one by one, Ramsha you put 1, Malaika you put 2, and Daniel you put 3. So 1 square minus 3 into 1 plus 4. देखेंगे क्या आ रहा है बेटा? 2 into 2 square minus 3 into 2 plus 4. 2 into 3 square minus 3 into 3 plus 4. Tell me, G, what are the answers? Okay, Daniel, 13. 13 for which number? 3, right? Okay, Daniel says it's 13. Malaika? Sir, 6. Okay, 6. So let me check. 2 square is 4. 4 twos are 8. 8 minus 6 is 2. 2 plus 4 is 6. Yeah, good. Okay, Rida, आप रह गई हैं खाली. 2, 2 minus 3 is minus 1. Minus 1 plus 4 is 3. क्या यही आ रहा है आपका भी, रिदा? Yes sir. अब जरा चेक करें ऊपर 3, 6, 13 लिखे हुए हैं कि नहीं. क्या लिखा हुआ है 3, 6 और 13? Yes or no? We have the same numbers, first, second, third, जो कि हमने फॉर्मूला से निकाले हैं. And why it helps? Because एग्जामिनर आपको कह सकता है कि फाइंड आउट द 100 टर्म. सो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में 100 डालना पड़ेगा. जरा एक बच्चा कैलकुलेटर पे करके मुझे बता दे कि ये आंसर क्या आ रहा है. तो जो भी आंसर आएगा, क्योंकि हम लोग इतने फारग तो है नहीं ना कि इतना बड़ा सीक्वेंस हम लोग बनाने बैठ जाए वहां पर, तो हमें फॉर्मूला बनाकर वैल्यू पुट करनी है. तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000. 10,000 टाइम्स 2 इज 20,000. 20,000 माइनस 300 इज 19,700 प्लस 4, सो 19,704. प्लीज चेक किए मैंने ठीक किया कि नहीं.
फिर जल्दी में किया, होपफुली ठीक है। ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच। सो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस इज डन, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आ गई बेटा सबको? सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्यूबिक सीक्वेंस। सेम पैटर्न है उसका भी, अच्छा, खाली उसका क्यूबिक का फॉर्मूला बनता है, कैसे बनता है वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। क्यूबिक में सबकी रिवीजन हो जाती है, एक ही क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि बस उसमें सबकी रिवीजन हो जाए, क्यूबिक सीक्वेंस। ठीक है जी, बस एक मिनट जरा मुझे जरा दीजिएगा, मैं अपने फोन से जरा सीक्वेंस नोट कर लूँ। ओके, लेट्स राइट दैट। ये काफी डिफिकल्ट सीक्वेंस है लेकिन अच्छा सीक्वेंस है जिसमें बच्चों को काफी समझ आ जाती है। 4, 14, 40, 88, 164. Okay, these are the first five terms of the sequence. And rather, we are already familiar that the formula for the quadratic cubic sequence is ax cube plus bx square plus cx प्लस डी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है ना कि 2 से स्टार्ट हो, इसकी पावर 3 होती है, यस और नो? यस सर। चलें जी, डिटरमिन करते हैं, जरा डिफरेंसेस निकालेंगे। फर्स्ट डिफरेंस निकालें बेटा, इनका देखना थर्ड डिफरेंस सेम आएगा। व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस बेटा, जरा चेक करके बता दें। पहले दो का क्या है? 14 - 4 10, 40 - 14 26, 88 - 40 48, एंड 164 - 88 क्या आता है बेटा, जरा देख के बता दें मुझे। 76। ओके, थैंक यू। ओके, नाउ लेट्स चेक द सेकंड डिफरेंस, क्योंकि फर्स्ट सेम नहीं आया तो सेकंड डिफरेंस चेक करते हैं। It's 16. What about here? 48 minus 26. 48 minus 26 is, it's 22, and 76 minus 48, it's 28. Now, Ramsha, you can see that second difference is also not same. Do you agree with me or not? Okay, Ramsha तो unfortunately left कर गई है. Hopefully she'll join soon. Okay, Rida, you can see that beta, it's the third difference is plus 6 and plus 6. Okay, Ramsha is back. So Ramsha, you can see that the second difference is not same, but the third difference is same. Is this clear? Now we have to find out the value of a the way we used to find out in quadratic sequence. So in cubic sequence, a is equals to third difference. Now it is in third difference में third difference होगा, वहां पे second difference को divide by 2 करते थे, लेकिन यहाँ पर third difference को हम लोग divide by 6 करेंगे. Okay, keep this in mind. So 6 divided by 6 is 1. ये हमारे पास 1 सर आ गया। डिवाइडेड बाय 6 क्यों करेंगे? बेटा ये थर्ड डिफरेंस है आपका, ठीक है, इसलिए हम लोग करते हैं इसको। इज दिस क्लियर? तो हर थर्ड सर डिफरेंस को क्वाड्रेटिक 6 में डिवाइड मेथड करेंगे। डिफरेंस नहीं आ सकता। जी क्वाड्रेटिक मेथड डिफरेंस नहीं आ सकता। नहीं, क्वाड्रेटिक में थर्ड डिफरेंस आ ही नहीं सकता। आप कैसे क्वाड्रेटिक में थर्ड डिफरेंस लाएंगी? सेकंड डिफरेंस सेम हो जाता है ना तो सिर्फ इसमें ठीक आता है। है थर्ड डिफरेंस। जी। क्यूबिक में ही थर्ड डिफरेंस आएगा, ठीक है। फोर्थ तो नहीं आता। नहीं नहीं, फोर्थ नहीं आता, ओ लेवल्स में फोर्थ फोर्थ डिफरेंस वाले सीक्वेंसेस नहीं है। क्लियर है? अब जैसे ही आपने ये कर लिया तो इसका मतलब है कि यू हैव ए एन क्यूब, तो हमारे पास आ गया है 1n क्यूब। डू यू एग्री विद मी रमशा? यस और नो? यस यस। ओके, नाउ इट्स टाइम टू मेक दैट टेबल, जो कि आपने याद करना है कि जी सर ने कहा था कि जी टेबल बनाना है, तो फौरन से आपने एक छोटा सा टेबल पेपर पे बना देना है, ठीक है, विद द 3 रोज। 3 रोज के जरिए अगर नंबर सेम आ गया तो एज इट इज लिख देंगे, नंबर सेम नहीं आया तो उसका फॉर्मूला बनाएंगे, बस यही टेक्निक है, राइट? ओरिजिनल। ओके, नीचे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लिखते होते हैं ए एन क्यूब, अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास 1n क्यूब आया है। ठीक है जी, ओरिजिनल सीक्वेंस जरा एक नजर देखते हैं ऊपर से कि है क्या। 4, 14, 40, 88, 4, सॉरी 40 लिख दिया मैंने। 4, 14, 40, 88, 164। आई होप मैंने सही लिखा है, जरा देख लेंगे जी, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ। ओके, 1n क्यूब। ओके, 1 क्यूब इज, रिदा बेटा माइंड जरा थोड़ा सा अपना तेज करो, 1 क्यूब इज, मेक इट क्विक एवरीबॉडी। सर एंड टू 1। क्यूब इज, ओके 2 क्यूब इज,
8, 3 cube, 27, 4 cube, 64, 5 cube. 125, अब यहाँ पे हम माइनस करते थे, एग्री? चलें, 4 में से 1 माइनस करें, क्या आ रहा है? 3। 14 में से 8 माइनस करें, 6। 40 में से 27 माइनस करें, इट्स 30, 13। 80 88 में से 64 माइनस करें, 24, ओके। एंड 164 में से 125 माइनस कर लें बेटा, 89, ओके। नाउ द नंबर्स आर नॉट सेम, तो अब हमें इस सीक्वेंस का फॉर्मूला बनाना है, और इस सीक्वेंस का फॉर्मूला बना के हम लोग 1 एन क्यूब के साथ लिख देंगे। इज दिस क्लियर रेदा? यहाँ तक क्लियर है? yes sir, ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ दिस सीक्वेंस। सो अब ये सीक्वेंस लिख देंगे तो मतलब हमारा एक नया क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? अब उस क्वेश्चन को भी फिलहाल के लिए भूल जी। 3 6 13 24 39। ओके जी। मलाइका, फर्स्ट डिफरेंस क्या है बेटा? +3, 3 देन +7, देन plus 11 +11, जल्दी जल्दी बोलो। फिर क्या है भाई? plus 15 +15। ओके दानियाल, सेकंड डिफरेंस है बेटा +4। सेकंड डिफरेंस सेम हो गया, मतलब कि सीक्वेंस क्वाड्रेटिक है, ठीक है जी। जरा जल्दी से बस कर लेंगे ताकि बस हमारा जल्दी जल्दी काम खत्म हो। एक ही वैल्यू निकालने के लिए सीक्वेंस क्वाड्रेटिक है, तो सेकंड डिफरेंस डिवाइड बाय व्हाट? 2 वेरी गुड। तो 4 डिवाइड बाय 2 इज 2। 2 ओके जी, अब वो टेबल बनाएंगे तो मतलब ये हमारे पास 2n² हो गया, ठीक है जी, रिमेंबर दैट। सो बस अब वो छोटा सा एक टेबल बना लेंगे जल्दी से, और बस जल्दी जल्दी हम लोगों ने इसके फॉर्मूले जो हैं वो हम लोगों ने लिखने हैं। सो ये मेरा ओरिजिनल वाला पोर्शन है, और ये है मेरा नीचे वाला है 2n², ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन में सारे सीक्वेंस रिवाइज हो जाते हैं। सो सीक्वेंस लिख लें जरा, 3 6 13, 3 6 13 24 एंड 39। ओके, 2n² डालते हैं इधर जी, 1 2 1 1 2 2। ओके, 2 इज 4 एंड 4 2 8। ओके, 3 इज 9 9 2 18। 4 is 16, 16 times 2 is 32. Okay. 5 square is 25, 25 times 2 is 50. Okay. So now it's time to minus it, right, Ramsha? 3 minus 2 is 1. 6 minus 8 is -2. 13 minus 18 is -5. Agree? And 24 minus 32 is what? Please check. -12 It's नहीं यार, क्या हुआ है? 24 minus 32 इतना कोई 8 बड़ा है, नंबर तो नहीं है। 8 है, It's -8. Okay, 39 minus 50 is -11. Agree? तो बस अभी हमें पता लग गया कि यहाँ पे 3 का गैप है, ये अरिथमेटिक है। वहां पर फॉर्मूला बना के 2n² के साथ लिखेंगे और वो पूरा फॉर्मूला ऊपर लिख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। सो यहाँ पे बस वी नो दैट द डिफरेंस इज -3, हमें नजर आ रहा है। सो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a1 इज द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 और d इज -3। सो 1 -3n प्लस 3। So -3n प्लस 3 प्लस 1 -3n प्लस 4। पेपर में इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना डिफिकल्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ताकि अब कोर्स खत्म हो जाए, आपका का टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है? पेपर में आसान होता है, पास पेपर रेडी है, मैं करवाता हूँ अभी आपको। हमारे पास फॉर्मूला आ गया ना रमशा? जी, इस 3n प्लस 4 को हम लिखेंगे इधर, कहाँ पे? इसके साथ, टू एन इधर क्यों स्क्वायर लिखेंगे? प्लस ओ थ्री अच्छा एन अच्छा, प्लस फोर लिख दिया। हाँ, और अब इस सारे को हम लोग लिखेंगे बिल्कुल ऊपर ले जाकर, ठीक है, ये यहाँ हम पे। क्यों ऊपर लिख रहे हैं बार बार? क्योंकि हम लोग तो क्वेश्चन तो क्यूबिक सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं ना, समझ आ रही है आपको? हम्म, अब जरा देखिए, हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला आ चुका है एन क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है एन क्यूब प्लस 2n², नीचे क्या था? +3n प्लस 4। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। जरा कैलकुलेटर निकाल लें और एन क्यूब की जगह पे 1 डालें। एन की जगह पे 1 डालें, देखिए 4 आएगा। चेक करें जरा।
मैं आपके सामने आपको चेक करवाता हूँ. Okay, we have that formula n cube plus 2n square plus 3n plus 4. तो ये फॉर्मूला आपके सामने भी आएगा. एक मिनट से करिए, इसको कैलकुलेटर ऑन हो गया. Okay, so it's n cube means 1 bracket close 1 cube plus 2 into 1 bracket square. रिदा देख रही हो बेटा? प्लस 3 into 1 प्लस 4. देखिए जी, ये तो 10 आ गया यार. इसमें हमने क्या गलती की है? कोई गलती हो गई है. यस, इट्स -3n. हमने +3n लिख दिया यहाँ पे गलती से. एक मिनट, मैं जरा इसको साफ कर लूँ. n cube, it's n cube plus 2n square -3n plus 4. ठीक है जी. तो ये -3n है खाली, तो खाली मैं इसको डिलीट करके माइनस लिखूंगा. सी वालेकुम 4 आ गया. सर। वालेकुम सलाम. थैंक यू. ओके, सर मैं लेट हो नाउ गया था, अकाउंटिंग क्लास थी सही है। नो प्रॉब्लम. बस आप रिकॉर्डिंग का हिस्सा सुन लीजिएगा. अब n की जगह पे मैं 2 डाल रहा हूँ. ठीक हो गया सर, अल्लाह हाफिज। ओके, सो इट्स 14. देखें जी, सेकंड पे डाला मैंने 14 आ गया. थर्ड पे चेक करें, मैं 3 डालूंगा तो 40 आ जाएगा. देखिए 3 डाला मैंने, 40 आ गया जी. समझ आ गई बेटा सबको? मलाइका, दानियाल, समझ आ गई बेटा? थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन एक दफा आप लोगों की ग्रिप हो जाए तो ये सीक्वेंसेस बहुत आसान टॉपिक है. ठीक है, चलें अभी चलते हैं जी हम लोग जरा पास पेपर पे. कि हमें पास पेपर के ऊपर ग्रिप लेनी है. सो वी हैव टू सी. ये मैं नोट्स आपको क्लास के बाद आप लोगों को नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे. ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड. Topic sequences worksheet. Okay, that's the worksheet. Okay, everybody, get ready, please. See, find the next term of the sequence, and it is in the exam for 1 and 2 marks only. So next term of the sequence, first of all, हमें sequence देखना है कि है क्या. So it's -5. It is also -5. It is also -5, and it is also -5. So 2 minus 5 is what? -3. It's, yeah, it's -3. So it's -3. Now they say that find the n term of the sequence. We know that the sequence is a arithmetic sequence. An is equals to a1 plus n minus 1 into t. A1 is the first term, 22, plus n minus 1, and the difference is -5. So 22 minus 5n plus 5. Arrange कर लें, -5n plus 22 plus 5. So -5n plus 27. Now it's time to check. पेपर में चेक भी कर लीजिएगा कि आपने ठीक भी बनाया है कि नहीं. -5 into 1 डाल के जरा चेक करता हूँ कि मेरे पास आंसर 22 आता है कि नहीं. -5 plus 27. Yes, 22. It's correct. So I have to write here -5 and plus 27. Okay. Is this clear, everybody? Now they say that it's 1, 25, 45, and 67. So we have to write down the next two terms. So let's find out the difference plus. What is the difference here, please? Plus 22. What about here? It's also plus 22. It is also plus 22. So the next term is 67 plus 22 is 9. And then 2 plus 6 is 8. It's 89. Okay. So then after that, 89 plus 22. 89 plus 22 is what, Bacha? 111? Yes or no? Rida, समझ आ रही बेटा? जी सर. Okay, now it's n term. N term, the formula is arithmetic. Sequence arithmetic है तो arithmetic का formula लगाओ. Geometric हो तो geometric का लगाना. A1 कहता है first term को, first term यहाँ पे 1 है, प्लस n minus 1 और डिफरेंस 22 है. तो जरा बस अलजबरा है. 1 plus 22n minus 22 अरेंज करना जरूरी है. 22n minus 22 plus 1. So 22n minus 21. अब चेक करते हैं कि हमने ठीक बनाया भी है कि नहीं. तो 1 पुट करके देखेंगे कि 1 आ रहा है कि नहीं. 22 into 1 minus 21. So 22 minus 21, it is equals to 1.
So it's correct. So write the formula 22n plus 21 is the formula. So 2 marks more in the past paper. Okay. What is the gap? Arithmetic हुआ तो मैं नहीं करूंगा. ठीक है जी. What is the gap, beta? Check करें. 15 minus 7 minus 15 is what? It's minus 8, right? And here it's also minus 8. Okay, it's arithmetic. तो ये आप लोग खुद करें. The n term of the sequence is n square plus 7. Write down the first three terms of the sequence. इसका क्या मतलब है रिदा? सर n में 1 और 2 और 3 पुट करना है. Very good. तो first term होगी 1 square plus 7 which is equals to 8. 2 square plus 7. 2 square is 4. 4 plus 7 is 11. Okay. 3 square plus 7. 9. 9 plus 7 is 16. Okay. Ramsha, read the question, beta. Which part? Yeah, this question number 5, part A. The nth term of a sequence is 6n minus 4. Write down the first three terms in the sequence. So what do we have to do in this? Formula is already given. Sir, we have to put 1, 2 and 3 again in the n term. हाँ जी, तो रमशा ये आपको भी पिक करना बेटा. फॉर्मूला आपके पास गिवन है. आपको n की जगह पे 1 2 3 डालेंगी तो आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मिल जाएगी. इज दिस क्लियर? Yes. So 6 ones are 6 minus 4 is 2. 6 twos are 12. 12 minus 4 is 8. 6 threes are 18. 18 minus 4 is 14. Now they say that kth term of the sequence is 422. Okay, we don't know the which term is 422. We have to find that term. So it is 6k minus 4 and the answer is 422. We need to find out the value of k. कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जहां पर 422 आ रहा है. तो 4 को उधर ले जाए. 6k is equals to 422 plus 4. 6k is equals to 426. Divide by 6 on both sides. So 6 and 6 cancelled. So 6 ones are 6, 6 sevens are 42, and okay, it's 71 term which is 422. अगर आप इस सीक्वेंस को 71 टर्म तक लेके चले जाएं तो आपके पास 422 अवेलेबल हो जाएगा. इज दिस क्लियर? Yes. ओके. नाउ द फर्स्ट इट्स प्लस 4. ये आप लोग खुद करें. डू इट योरसेल्फ. ये मैं यहाँ पे वर्कशीट में डाल दूंगा. दीज आर द फर्स्ट इन सीक्वेंस. 25 माइनस 7 ये भी खुद करें. अरिथमेटिक है. ओके, अगेन रामशा. The sequence formula is given. They say that find first three terms of the sequence. Can you do this now? Hopefully. Yes. Yes. Okay. A sequence of pattern is made using rectangular blocks. Okay, now let's see. 1, 4, and then in pattern 3 we have 7 blocks. So check 1 plus 3. Yeah. Is this clear? Yes or no? Yes. Okay, 1 3 5. So there are one block in the first row, then we have 3, then we have 5. It means that in the next we have 7. Yes or no? Yes. Yes or no? So let's do this. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 7. Okay, 7 boxes in pattern number 4. Okay, now no box, 1 box, 2 box, it means that 3 boxes. So we have to leave 3 boxes like that. Is this clear, everybody? Yes. So number of blocks in pattern number 1 is 1 block. Then we have 4, then we have 7, then we have how many? Check. 7 plus 3, 10. And then we have 13. So you have to draw the pattern and then you have to complete the table. Now they say that find the number of expression for the n term for the number of the blocks in the pattern n. So number of blocks का sequence रिदा क्या है बेटा? ये जरा बता दो मुझे. Number of blocks का sequence. जल्दी बोलें बेटा. Hurry up. Plus 3. नहीं रिदा, ये sequence नजर आ रहा है बेटा आपको? जी सर. This is for the number of blocks. वो कहता है find an expression in terms of n, मतलब n term निकालनी है इसकी.
So it is plus 3. So इसका मतलब है अरिथमेटिक है तो अरिथमेटिक के फॉर्मूले में लिख लें A1 क्या है बेटा रिदा व्हाट इज A1 A1 is 1 plus n minus 1 and the difference is 3. So 1 plus 3n minus 3. Arrange कर लें जरा 3n minus 3 plus 1. So 3n minus 2 is the answer for this sequence. ये formula है sequence का समझ आ गई रिदा Okay. Tara wants to make one pattern in this sequence and she has 84 blocks. How many blocks she has? She has 84 blocks. Work out the largest pattern number she can make and the number of blocks remaining. Okay, let's see. She has 84 blocks. So let's see. The formula for the number of blocks is 3n minus 2. It is equals to 84. Let's check that how many blocks she can make. We have to find out the n here because she has 84 blocks and the formula for the number of blocks is already given. So 3n is equals to 84 plus 2. 3n is equals to 86. I know that 86 is not completely divisible by 3. Divide by 3 because 8 plus 6 is 14. So 3 cancel. So we have to check 86 divided by 3 in calculator please. 86 divided by 3 देखें exact answer क्या आ रहा है बेटा please 86 divided by 3 the exact answer is 28.67 yes or no ये आंसर आ रहा है so it means that Rida she can make 28 patterns incomplete so how many blocks will be remaining so we have to check that in pattern number 28 how many blocks are used so 3 into 28 minus 2 please check 3 into 28 is what 3 into 28 84 minus 2 is 82 it means that 82 blocks are used so only 2 blocks are left is this clear everybody this is for 4 marks and it's very easy just look at the question बड़ा आसान था इतना मुश्किल नहीं था yes or no is this clear मुझे तो मुश्किल लगा है। नहीं अब देखिए ना पहले क्वेश्चन में क्या था रिदा पहले एक सॉरी रमशा पहले क्वेश्चन में आपने पैटर्न को बनाना था वो आसान था जी ओके फिर टेबल कंप्लीट करना था तो वो हमने काउंट किया है ना ऊपर से टेबल कंप्लीट किया है ना जहां पे से नजर आ रहा है 1 4 7 मतलब 10 13 ये भी हाँ आसान था वो भी आसान है। अच्छा फिर फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन पैटर्न n तो आपको n टर्म बनानी है इसकी तो आपने इसका फॉर्मूला बनाया क्या ये आसान है हाँ ये 1 4 7 10 और 13 का फॉर्मूला बनाना आसान है क्योंकि अरिथमेटिक है ठीक है हाँ हाँ अब वो देखो क्या है कि तारा वांट्स टू मेक वन पैटर्न इन दिस सीक्वेंस तारा इस पैटर्न में एक सीक्वेंस बनाना चाहती है लेकिन उसके पास 84 ब्लॉक्स हैं और शी वांट्स टू फॉलो दैट सीक्वेंस ये जो ऊपर गिवन है तो हमारे पास उसका ओके फॉर्मूला गिवन है तो 3n माइनस 2 हमने n निकाल लिया कि कितने नंबर वो बना सकती है शी कैन मेक 28 बट दिस 0.6 इज लेफ्ट तो हमने चेक किया कि 28 पैटर्न में वी कैन यूज ओनली 82 ब्लॉक्स हम इसमें 29 पैटर्न नहीं बना सकते इज दिस क्लियर नहीं ये पार्ट की समझ नहीं आ रही या लास्ट वाला पार्ट ये कौन सा नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिमेनिंग हाँ देखो हमारे पास था दिस वाज द फॉर्मूला इन द क्वेश्चन यस और नो यस नाउ शी हैज 84 ब्लॉक्स तो मैंने इसको 84 के इक्वल पुट किया है to I was interested to see that how many blocks she can make with that is this clear so then I found जी out the n value which is 28.6 so it means that she can make 28 patterns complete and this 0.6 will be the leftover blocks is this clear यस now then I saw that if I put 28 in 3 I get 82 it means that out of 84 82 blocks are ओह used and 2 are left is this clear यस like for this is something like let me tell you wait a minute like for example this is something like you have 100 chips and you want to distribute in your 30 friends
So it means that you can give them 3 each. You cannot divide that chips into zero point 0.3. Is this clear? Yes. Okay, that was the concept behind that. Okay, so ये तो easy है जरा, ये भी arithmetic है. Okay, there are 152 seats in a theater. एक theater है जिसमें 152 seats हैं. There are 12 seats in the front row. आपकी front row में 12 seats हैं, तो each row has 2 more seats than the row in front of it. Work out the number of rows for 152 seats in the theater. कितनी rows बननी चाहिए? Tell me. There are 12 seats in the front row. कि एक front row है, ये आपकी front row है, यहाँ पर होगी आपकी 12 seats. Each row has 2 more seats than the row in front of it. तो इसका क्या मतलब है? इससे पीछे कितनी सीट्स होंगी? 14, Good. Then 16, then 18, 18, then 20, 20, then 22. 22. चेक करें जरा, ये 152 से ऊपर ना चले जाएं किधर हम लोग. 22, यहाँ पे 22 लिखना था. चेक करें कितने हो गए हैं. 12 plus 14 plus 16 plus 18 plus 20 plus 22. कितने हो गए? 102. ओके 102. ओके, इसके बाद 24. 24 ऐड कर दो. कितने हो गए? 126. ओके, अभी 26 ऐड कर दो. कितने हो गए? 152. ओके 152 सीट्स बराबर हो चुकी हैं. तो पहली रो में 12 थी, बाकी के सब में दो दो हैं. तो इसका मतलब है कि काउंट कर लें कितनी लाइनें लगाई हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. देयर आर 8 रोज. 8 रोज जो है ना इसकी बनेंगी 152 सीट्स की. ओके, look at the question everybody. Left side is west side and right side is east side. 1 3 5 7 and 347, तो ये odd numbers हैं. And 2 4 6, these are even numbers. Agree? So now they say that a road has 349 houses on it. It is numbered from 1 to 349. Okay, we can see that. The diagram shows some of the house these houses. These houses on the west side of the road have odd numbers, and the houses on the east side has even numbers. Put a ring around the number in the list that are on the west side. So west side पे odd numbers हैं. So there is 80, 25 is odd, 87 is odd, and 329 is odd. Is this clear, everybody? That these houses, it will be they will be on left side. Yes or no? Yes. Okay, now they say on the east side, how many houses are there between the house number 168 and house number 184? That is the reason examiner ने block किया हुआ है between 168. So it's 170, 172, 174, 176, 178. Between में 168 नहीं आता था. 180 and 182. बस 184 भी नहीं आता. Count करें 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 houses. Is this clear, everybody? Yes. Okay, how many houses on the road have a house number that is a multiple of 39? So 39 के multiples जरा करने पड़ेंगे. Table पढ़े 39 का. 39 ones are 39. 39 twos are, please make it quick. Hurry up. 78. Okay, thanks. Okay, 39 threes are 117. 117. ये odd number है, तीनों आएंगे. 39 into 4. 156. Thank you. And 39 into 5. ये ज़्यादा हो जाएगा शायद. 195. Okay, 195 ये भी आएगा. 39 into 6. 234. 234. 39 into 7. 10 तक सारी आएंगे. 73. 3. Sorry, 2. 273. Thanks. Okay, 8. 312. Okay, 9.
351. ओके, एक मिनट जरा देखते हैं कि आखिरी नंबर क्या लिखा है। इट्स 350 49, तो ये नहीं आता, 351 नहीं आता। काउंट कर लें बेटा। देयर आर 8 houses with the number which is a multiple of 39. Agree? Yes or no? Yes. Okay, then they say that Thomas delivers a leaflet to every house on the west side of the road, and he start at house number 1 and deliver to each house in order. Only west side पे deliver कर रहा है, मतलब odd numbers का हमें बनाना है expression 13579. Okay, रिदा बेटा +2 है कि नहीं है? जी सर। तो बस इसका मतलब है कि an इज इक्वल टू a1 1 है, प्लस n-1, और d जो है हमारे पास +2 है। सो 1 + 2n-2, okay, 2n-2 + 1, so 2n-1 is the answer. Clear है भाई? Yes or no? Ramsha, is this clear? Is this clear to you? जी। Okay, work out the house number of 140th house he delivers to. The 40th house, तो जाहिर सी बात है बस इस फॉर्मूले में 40 डालना है। 2 into 40 minus 1, 2 40s are 80, 80 minus 1 is 79 is the house number जहाँ पे 40th parcel उसने डिलीवर किया है। Is this clear? Now work out how many houses are on the west side. Okay, तो west side पर we have only 349 is the last number. So let's check कि कितना term है. So 2n-1 is equals to 349 is the house. Let's check कि कितने घर हैं left side पर. So 2n is equals to 349 plus 1. 2n is equals to 350. बेटा 350 का हाफ क्या होता है बेटा? चलें जी, make it quick. It's 107 175. 175 houses are there in the left side. चलें बेटा, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी की वर्कशीट जो है इंशाल्लाह ताला मंडे को करेंगे। कल भी हमारी कोई क्लास नहीं है, ठीक है, बिकॉज कल आई एम गोइंग टू आउट ऑफ सिटी। तो इंशाल्लाह ताला मंडे को हमारी जो फेस टू फेस क्लास होगी उसके अंदर भी होगा। और अगर मैं संडे को टाइम पर वापस आ गया पेशावर, तो मैं डेफिनेटली संडे को क्लास आपके साथ एक ऑनलाइन ले लूँगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक में सिर्फ और सिर्फ हमें वेक्टर्स को ख़त्म करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर हम रमज़ान के लिए बिल्कुल रेडी होंगे कि हम लोग रमज़ान में अपने पास पेपर सेशंस जो हैं वो हम लोग करके अपनी पास पेपर की बुकलेट्स को जो है वो ख़त्म करें। लेकिन अभी के लिए मैं नोट्स भिजवा रहा हूँ।